যদি গুজৰাটত বিজেপি ইমানেই শক্তিশালী হয় তেন্তে 16 গৰাকী সাংসদ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলত কিয় বাধা প্ৰদান কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে এই প্ৰশ্ন কৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মন্তব্য আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় দেশৰ সকলো ক্ষমতা আপোনাৰ লগত আছে সংসদত আসনৰ ওপৰত আসন আছে আপোনাৰ আৰু এটা নিৰ্বাচনৰ বাবে ভয় খাইছে আপুনি এইদৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা গান্ধীনগৰ সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থীয়ে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ বিৰুদ্ধে চোকা সমালোচনা আৰম্ভ কৰে পোনপটীয়াকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গৃহমন্ত্ৰীৰ আপাত আশংকাৰ আৰৰ কাৰণক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে গান্ধীয়ে শুনকচোন কি কৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে मैंने सुना है कि गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी ऐसे ही बैठ गए चुनाव से पहले या तो डराए गए हैं धमकाए गए हैं या किसी को घूस दे दिया है और बैठ रहे हैं कि चुनाव ही ना हो अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो इतने बड़े प्रधानमंत्री हो देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो किस बात का डर है खड़ा करिए 100 प्रत्याशियों को हराइए उनको यही तो चुनाव होता है यही तो लोकतंत्र होता है मंच पे खड़े होकर लोगों को झूठ बोलना नहीं होता है मंच पे खड़े होकर लोगों को गुमराह करना या लोगों के जज्बातों को उभारना ताकि तुम्हें वोट मिल जाए तुम सत्ता में रहो तुम्हारे बच्चे फूले फले और जनता खाई में रहे ये लोकतंत्र नहीं है আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক চেহেনশাহ আখ্যা দিছে তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত ধুলিৰ এটুকুৰাও দেখা নাযায় কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কয় যে ৰাজপ্ৰসাদত বাস কৰে কিন্তু আপুনি জনসাধাৰণৰ পৰা বিচ্ছিন্ন চেহেনশাহ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেওঁৰ ভাতৃ তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক শ্বেহজাদা বুলি অভিহিত কৰাৰ বাবে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে আৰু শনিবাৰে গুজৰাটত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক চেহেনশাহ বুলি অভিহিত কৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয় মোৰ ভাইটিক শ্বেহজাদা মাতে মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে সেই শ্বেহজাদাই কেনেকৈ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ 4000 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আপোনালোকৰ সমস্যা শুনিলে সেই শ্বেহজাদাই মোৰ ভনী ভাই কৃষক আৰু শ্ৰমিকক লগ পাই তেওঁলোকৰ কি সমস্যা আছে বুলি সুধিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে গুজৰাটৰ বানাসকাট ৰাজ্যৰ সমাৱেশত ভাষণ দি এইদৰে কয় তেওঁ লগতে কয় যে যিফালে আপোনাৰ চেহেনশাহ নৰেন্দ্ৰ মোদী যিজন ৰাজপ্ৰসাদত থাকে টেলিভিছনত চাইছেনে তেওঁৰ মুখত ধুলিৰ এটুকুৰাও এটা দেখা পোৱা নাযায় আৰু তেওঁ আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ কেনেকৈ বুজিব শুনাই লৈছোঁ সেই মন্তব্য वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं मैं उनको बताना चाहती हूं ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं मेरी बहनों से मिले हैं मेरे भाइयों से मिले हैं किसानों से मिले हैं मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं उनको हम हल कैसे कर सकते हैं और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता एक दाग नहीं है धूल का एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो महंगाई से आप दब चुके हो हर तरफ महंगाई मेरी बहनें मिट्टी के का तेल आज कितने का है सब्जी खरीदने जाती हो मिलती है क्या तुम भाव क्या है उसका पेट्रोल डीजल का दाम क्या है मेरे किसान भाइयों किस तरह से गुजारा कर रहे हो खेती के हर सामान पे जीएसटी है हर सामान महंगा हो चुका है मेरी बहनें अगर कोई त्योहार होता है कुछ खरीदना पड़ता है नए कपड़े बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है
फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी, ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं, उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে এই মন্তব্য কৰে PM মোদীয়ে বাৰে বাৰে ৰাহুল গান্ধীক শাহী পৰিবাৰ অৰ্থাৎ ৰজাঘৰৰ শ্বেহজাদা বুলি অভিহিত কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে গুজৰাটত এখন সভাত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীক লক্ষ্য কৰি কয় যে পাকিস্তানে গ্ৰেণ্ড অল্ড পাৰ্টিৰ শ্বেহজাদাক ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আগ্ৰহী কাৰণ দেশখনৰ শত্ৰুৱে নেতৃত্ব দুৰ্বল চৰকাৰ বিচাৰে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মোদীৰ ওপৰত আৰু আক্ৰমণ চলাই কয় যে গুজৰাটে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সন্মান আৰু আত্মসন্মান দিছিল আৰু ক্ষমতাও দিছিল, কিন্তু তেওঁক কেৱল ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগতহে দেখা যায়, অইন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতেহে তেওঁক দেখা যায়। আপুনি দেখিছেনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এজন কৃষকক লগ পোৱা, কৃষকে কিমান প্ৰতিবাদ কৰিলে, শ শ কৃষক শ্বহীদ হ'ল, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ নাযায়। তাৰ পিছত নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অনুভৱ কৰে যে কৃষকে আন্দোলন কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে ভোট নাপাব। তাৰ পিছতে PM মোদীয়ে আইন সলনি কৰে। শুনক সেই মন্তব্য। आज के जो प्रधानमंत्री हैं, जरा उनकी कार्यशैली को आप देखिए। गुजरात ने उनको सब कुछ दिया, उनको सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनको सत्ता दी। आज प्रधानमंत्री बने, 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं। जब जब आप उनको देखते हैं तो आप मुझे खुद बताइए, आप टीवी पे उनको देखते हैं कि नहीं? देखते हैं टीवी पे? देखते हैं ना? दिखते हैं। कहां दिखते हैं आपको? बड़े मंचों पे दिखते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ दिखते हैं, दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों के साथ दिखते हैं ना? बड़े बड़े खरबपतियों के साथ दिखते हैं, सेठों के साथ दिखते हैं। कभी आपने उनको किसी किसान के घर जाते हुए देखा है? कभी आपने उनको किसी गरीब के घर में जाते हुए देखा है? मैंने यूपी में काम किया पिछले 5 सालों से, वहां पे उनका संसदीय क्षेत्र है। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जी किसी एक गरीब के घर नहीं गए हैं। कभी नहीं पूछा है इन 10 सालों में कि भाई तुम कैसे हो। किसानों के लिए नीति बनाते हैं, किसान आंदोलन करता है, लाखों किसान 4 किलोमीटर दूर उनके घर से बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, महीनों के लिए उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, 600 शहीद होते हैं किसान, लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर चल के हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। जब उनको पता चलता है कि चुनाव आ रहा है और ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमें वोट नहीं मिलेगा, तब चुनाव के 2 महीने पहले वो कानून बदल देते हैं। ये है उनकी कार्यशैली। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে লগতে কয় যে বিজেপিয়ে সংবিধান সলনি কৰিব বিচাৰে আৰু বিধি পুথিৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক দিয়া অধিকাৰ হ্ৰাস আৰু দুৰ্বল কৰিব বিচাৰে। গুজৰাটৰ বানাসকাট লোকসভা সমষ্টিৰ লখানীত নিজৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী গেনিবেন ঠাকুৰৰ বাবে ভোট বিচাৰি ৰাজহুৱা সভাত এইদৰে ভাষণ দিয়ে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে। আৰু মই ইয়াৰ লগে লগে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও। ধন্যবাদ।